So my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes. Yes, okay, sir. okay. Then I'm okay. So in the last class we have discussed about the gradient descent. Okay. So but in this class I am directly switching to the different topic. Uh, that topic I just take in the last class because just that is a eye-opening thing. Means machine learning means is not just coding and just doing the part of getting the answers. Okay, that is the mixtures of the mathematics and some concepts. So now I will go for the some feature engineering thing. Okay, so what is the means of feature and features engineering you can say. So first of all, you can understand from the beginning or the sketch I am telling you, you have some data like you can say you have some data that may be in the CSV file. Okay, or you can convert data into the CSV file like. So some columns are there. Okay, column 1 and column 2, column 3. Likewise, you have the 100 columns like. So in the layman term, you can say the features are just a column. Okay. So this column is a one feature, this column is a one feature, this column is a one feature, and this column is a one feature. Just wait. My blackboard is not visible or visible. Yeah, it's No, it's visible, sir. visible. Okay, so I am enlarging that part if it is not. Now it is visible better? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So you can say in layman term, you can say that is the features. Okay. So in the features, you can find somehow some missing value in this part. So you have to put the means some value to the numbers. So first you can say there are in the features engineering, there are some parts you can say. First part is the feature transformations. Feature transformations. So in features transformations, some parts you will cover, and this part I will cover in the lab sessions, not in the theoretical part, but I will give you the some scenarios of the feature transformations you will cover up in the next upcoming labs. So there may be the some missing value imputations. So what is the means of missing value? Some values are not given in the data. Means you can some sensor is taking some data and sometime the value is missing or not recorded. So you have to put that value. So some techniques are there on the basis of that. You have to put some value. So you can say that is the missing value imputations. Yes. So we will cover up this part in the lab. And second, you can say second handling the categorical data. So in the last session, I have given you one assignment that is the one hot encoding. So you have done this part? Anyone? We have checked that. Yes, We sir. are Yeah. not So in all the not yes, all wait. the types of one hot encoding, but initially we understand that assigning the 0 and 1 value. Yeah, maybe. But handling the categorical data, that is okay. So in the assignment, I have given you this part. So I am telling you in the lab part, we will cover up in the next session. In the tomorrow session, I will means take some thing, means I will teach you one hot encoding also. I will repeat that part in the lab too. You have covered this thing. Yes. And maybe in the third part, you will cover up that is the outlier detection. So again, in the lab, I will cover up this thing detection and some feature scaling part. So you can say in the features transformation, these are the parts you can cover. And second thing is the uh, in this part that is the feature construction. Okay. So also we will cover up this features construction in the lab sessions. Okay. But now in this session, we can go for two things. That is the feature selection and features extraction. Feature extraction.
So these are the two parts we will cover up in this session: the feature selection and the features extraction. So you can say there are maybe some parts. So in the features extraction, so one is the PCA, that is the principal component analysis. I will teach you this thing. And second, you can say that is the technique is LDA, that is the linear discriminant analysis. And third, you can say this is for linear type of data. And if you are getting the non-linear type of data, that TSNE. Okay, so this is the technique you can go and you can do the features extraction by this method for the nonlinear uh, data is present. And after the features extraction, we can go for the feature selection, or I will teach you this part how we can go for directly feature selection, and then we can go for the features extractions. Most of the time, what is happening when we are developed the model, then we will go for the feature selections also sometimes. So these are the four things you have to cover up in the features engineering, that is the feature transformation, construction, selection, and extraction. So we will cover up this thing here, and this part we will cover up in the lab sessions, upcoming lab sessions. So that part is clear? Yes, please. Yes, sir. Yes, yes, Okay, yes. good, good. So for this thing, try to understand features. Every time I'm taking the word features, so features clear, that is the column is the features. But now you can say this is total data, sir. This is the data, and these are the features. This one is the feature, this one is the feature, this one is the features, and this one is the features. So what is the problem? Why we are doing this thing, features extraction or selection? So what is happening? Try to understand one thing. I'm taking one example. If you have some image, okay, some image you have means I'm taking this thing. Some images is there, okay, and these are the pixels. I think everyone knows what is the means of pixels. Means the one unit, you can say this is one pixels. And this image I can take, this is the 28 by 28 image. Okay. Now I just want to recognize, or I just want to find this image in this picture. Okay. And I am taking every pixel. One pixel is one feature. I'm assuming one pixel is a one feature. So you can say the total features is 28 cross 28. Yes or no? Everyone is with me? Yes. Yeah. Okay. So what is happening here? Yeah. What is happening here? I am concentrating only this type of feature. Only this type of feature. What is the green in the green color? So now I just want to recognize this person with within this feature. So you can say if the total number of features is 28 by 28, I am taking only the 14. Okay, or 14 by 2, whatever. Okay, this type of feature I am taking, and this is covering only the this part, this green color part. So you can recognize this person, yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, yes, yes. Yes, sir. With I am asking with only with the features, with these features, you can recognize this person? No, it's not No. possible. Yeah, no possible, because some pixels you needed to cover up this part and this lag part. Yes. Hmm. Okay. Yes, So yes. now I am taking full. Okay. Now I am taking this picture. This the some red color. You can. I am taking some changing the color. Now I am taking this thing. Okay. This is these pixels I am taking, and I am saying now you can able to find out, you can identify this person with these pixels. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Very good. Now what I am doing, I am taking all the pixels. Okay, I am taking all the pixels, even though you can identify this person with these pixels also. But what is happening here? You are taking this pixels are using to identify this person. No, sir. Yes No, or no? No, sir. No, na? Unused. No, sir. no, Unused. no. Yes, yes, unused. So Unused. try That to is useless. understand. Yes, useless. Mhm. So try to understand when I am giving you some columns. Okay, column number one, column number two, column number three, and dot dot dot, column number 100. Okay, I am taking again, I am taking one example. Maybe only some values, some pixels you needed. 1, 2, 3, and some 49.
Okay, and other features you don't want to, means to identify some pattern, you don't need this type of features. Okay, so you can say, sir, only 4 features I needed. Okay, other features, whatever the 96 features I don't need to identify the patterns thing. Okay, so what is happening, अदर अगर आप इसको इन्वॉल्व कर रहे हो, अदर इफ यू आर इन्वॉल्विंग अदर फीचर्स, there is no effect on the accuracy thing. That part is clear to you. Only 4 features you needed for identify the things or identify the pattern. But if you are adding all the things, the computations is increasing. Yes. 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 Okay. Computations. Yeah. Computations increasing, and so we don't want this type of thing. Okay, in the machine learning, what we don't want this type of thing. And second scenario I am taking, okay, just wait. Second scenario is that what is happening after, okay, you are taking 1, 2, 3, and 49. After you are taking 50, 60, 70. Okay, these features. So there is no impact of these features, even though you are increasing the features, but there is no impact on the accuracy. Yes or no? Yes, Maybe sir. that is happening. That will happen if you are increasing the number. If you are increasing more number of features, what will happen? The accuracy may be decrease. Accuracy may be decrease. Most of the time, our analysis is that when we are increasing the features, the accuracy should increase. But in this scenario, you are seeing when we are increasing the features, either there is no effect, and second, the accuracy is may be decrease. Okay, so there may be two effect on this thing. Yes or no? Also, the computational time will be higher if Yeah, we increase yeah, the. yeah, yeah. Accuracy decreasing, and the computational thing is computation time will increase. So there are two means, you can say, that is two cons for this thing, means when we are increasing the features. So that is that thing, you can say, that is the curse of dimensionality. Curse of dimensionality. Dimensionality. Okay, so this is the word. When we are increasing the features, there is no effect, either no effect or the accuracy is decreasing. Then you can say that that is the curse of dimensionality. Because dimensionality, again, I am taking the word dimensionality. What is the means of that? Every feature has a dimension. Means if I am taking 1, 2, 3, 4 till 100, so the dimension of this data is 100. How many features are there? The dimensionality is there. Okay, so every feature has the one dimensionality. So you have the 100 dimensionality for this data, any data. And you can say, sir, if I am taking 4, so the dimension will be 4. If I am taking 3, so dimensionality will be 3. So we can visualize only the 2D, 1D, 2D, and 3D. After that, we can't visualize the thing, but we can say that is the n number of dimensional. N dimensional, or you can say some data is n dimensional or 100 dimensional or 1000 dimensional, whatever you can say. But what is the impact of that? What is the impact of that? What is happening if you are increasing the dimensional, if you are increasing the dimension, means if you are increasing these features or increasing the dimensional, there is no effect on the accuracy, either that is decreasing also, or computation will be increased. So what you have to do? You have to find the optimized features. Okay, you have to find the optimized features, means कि कितने features मुझे जरूरत है for finding the pattern, कि कितने की जरूरत थी हमें. Yes, यहाँ तक मेरे साथ हो सब लोग? Yes, sir. So you have to find the optimized features. So that is the first thing you have to go for. So we will do the feature selection and we will go for the features extraction. So what we are doing in these two parts, we are going for the optimized features. So everyone is clear till now? The things Yes. is clear. What is the means? Because every time in some interview, this word will come. What is the means of curse of dimensionality? Okay, so that part should be clear to everyone. I think that part is clear. So I can go for Yes, sir. further. Okay. Yes, sir. Okay. Now I have taken the example of means image.
then most of the time you will find the higher dimensional data. So when you are getting the higher dimensional data, you have to reduce this data. What is the means? First, I just want to tell, but just want to tell you what is the means of that higher dimensional data. Try to visualize. Uh, this is the 1D. Okay, this is the one direction, and I have some. You can say 1, 2, 3, and 4. Some data in. चलो ऐसे लिख लेते हैं 1, 2, 3, and 4. Okay. So this is one direction, that is X. Okay, so that is clear. And I have some points, you can say some data at this point, at this point, at this point, or at this point. So 4 points we have. So if you will see, that is covering this part, this box, that is covering this part in one direction, that is covering this part. So that is the dimensionality. You can say that is one direction data, 1D data. And on this data, if I am doing second type of data, that bidirection. Okay, bidirection. Or you can understand, if you are not understanding this thing, I am taking one example again. मैं ऐसा करता हूँ कि I am taking example of one house. I am saying कि if you want to buy a house and the total number of rooms is given to you. Okay, and second thing is given to you number of washrooms. And third, you can say on the basis of that, that is given the how much the price of that house. Okay. So there are first time I am taking the number of rooms. So these are the 4 rooms. Okay, one dimensional data, some 3, 4, 8, 10. These are the data. And now I'm taking the second dimension. The second dimension, so you can say this is X and this is Y. Y. So some rooms is there. So 3, 8, 4, 9, whatever I am writing. So whenever you are doing this thing, what is happening? You are increasing. So boxes are increasing. When you are searching in the one direction, only four boxes are there. When you are searching in the other direction, some boxes will increase. So what is happening here? When the direction, when the dimensionality will increase, the sparsity, one word is there, the sparsity. Sparsity. Okay. So data will go means more far. So you can say the data will go more far. Means when you are searching only in this direction, you will reach at this point quickly. When you are searching in this box, the data is going more far, more far. Okay, try to understand. When I am taking, so when I am taking 1, so you have to search only the 4. When I am taking this thing, you have to search. If I am taking same 4 data in this direction, so you have to search for 16. One direction, if I am again increasing the one more direction, so this will be the 3D data. Okay, when you will visualize this part, so you will find the data is going more far. Okay, so the word sparsity is using for this thing. So whenever the higher dimensional data is coming, the sparsity will be coming in the picture. Okay, this part, this thing is clear to you, everyone? Okay. Okay. The Yes, it is sparsity clear. is something related. So any question? I think Sir, it someone is asking. yes, yes, sir. It is something related to the number of zero that the sparse matrix Yeah, that that we is have. in matrix what we are doing. If you are getting the more numbers, so sparsity of that matrix is more. So in I am visualizing that thing in general way now. Then I will come to the matrix and other things. Okay. The sparsity मैंने कई बार आप लोग मैट्रिक्स में पढ़ते हो तो नंबर ऑफ जी जाती है और वो डेटा एक दूसरे से दूर हो रहा होता है. So try to understand means in the layman word ki what is going and what is the visualization of that sparsity. That part is clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, I want to. Yes, Yeah. it is clear. Okay. Yes. Very good. So now I just want ki means in the higher dimension too, I just want to go for the lower dimension. Okay. So I have to reduce some dimension. Hello. कि आपके पास फीचर या
you have the more features, and I just want to go for the lower dimension. So you can say this part is the dimensional reduction. Dimensional reduction. Yes, the high, so sparsity will be less. So you can say, sir, I have 1, 2, 3, 4, 100 columns. Okay, and I want to remove some columns. Okay, so you are reducing the dimension. Yes, the feature that is important for your pattern, you are taking only these features. Okay, so that will be good for your algorithm or the model. So the computation will be lesser and you are dealing with the less data. Yes, so that is the advantage of this thing. Just I am getting the call of PhD student. Yes. हाँ आरती, ये मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ मैं क्लास में ही हूँ। वो ऑनलाइन लिंक जो आया है उसे उसे ज्वाइन करो। हाँ नहीं नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ और सभी बच्चे हैं काफी बच्चे हैं, वो क्लास ले रहा हूँ अभी, इन बिटवीन है। ठीक है, जो लिंक आज आया है वो देखो। ठीक है, या देव जी से मांग लो, देव जी से मांग लो आज का लिंक। सॉरी, sorry for interruption, that is the students actually. Okay, so what we are Okay. doing, we the concentration for the features extraction or selection, that is you have to do the dimensional reduction. So the basic thing is clear to you. What is the means of dimensional reduction here? Yes, yes or no? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. But how are we reducing? Yeah, that part is coming. Okay, wait. So that is the motto of this session. We are going for dimensional reduction. One thing you can say directly, sir. Sir, if we have some data F1, F2, F3, F0, whatever, and F9, directly we F10. What we can do, sir? I don't want this column. I don't want this column. I don't want this column. So you can say this is the feature selection. After the observation, you can directly reduce the features. You can do the dimensional reduction by reducing, directly cut off the some columns, and you can say we have done some selection. Yes, directly you can say after just observing the data, you don't want some data, but this is the vague thing. You can't do the things like that. So we have to go for some type of techniques. So first we can go for the selection thing. I will tell you. Sir, Okay. Yeah. so feature selection is also part of dimensional reduction. Yes, yes. Yes, Because yes. again, the selection, yeah, means that not directly I'm taking selection means if the thing is that you have the 10 features and you are selecting something, some data. Okay. F9, F0, directly you are reducing some part. So you can say you are selecting something. Okay, some features. But the technique is different. After the features extraction, you can understand what data is useful for you and not useful for you. Directly, you can't do this part. That means after observing the data directly. Yes. So now I am coming that part. Then you can understand. I will give you some visualization. Then you can understand how we can select the data. Okay. Then I am going for the further thing. Further thing. Clear? Yes, Vita. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. One thing is that I'm taking little bit easier example. Okay, try to understand. First, I am taking one example. One photographer is there and some football match is there. Okay, some photographer is here. Some camera I am putting here. Okay, and it is taking the pictures. Try to understand what I just want to tell you. So the visualize, if you see the means this scenario, that is the 3D scenario. Yes, when you are taking, you are trying to Yes. capture this 3D picture, sorry, 3D environment, and you want to publish that in your newspaper. Means one photographer is there and want to publish this picture in the newspaper. Then it has to convert it into the 2D some picture. Maybe the orientation will look like the same whatever you are seeing, but
that is not a stable thing. Means every time you are taking the picture from here, somehow photographer is moving in this direction, from here it is taking. So different type of picture of same scenario you can get. Like this type of picture you can get. Yes or no? Yeah. You can Yes, sir. get some picture of this type, some scenario. Okay. Yes, So because of the when you are projection taking kind the of thing. picture, yes, beta, you are Then saying it is a something? kind of like projection. Yeah, you're saying it's kind of like projection. It can be happen like Yeah, you're right. So what is happening from different orientation, you are taking this type of picture. Okay. But but what is happening when you are taking this type of picture, the faces and other things not visible. In this part, everything is visible. In this part, maybe something is visible, something is blur or not means separable. So what I just want to tell you, when you are reducing the dimension, you are reducing the dimension in this part, 3D to 2D. Yes. But the yes, essence of data should be there. The essence of data, okay, spelling देख लेना, essence of data will be there. So I am taking this example. Why? Because if you are saying this thing, I am reducing the thing. I am reducing some dimension, but data should be that type. The essence of data should be there. Essence का मतलब क्या हो गया कि आपका डेटा रिड्यूस तो हो रहा है, बट ऐसे फीचर्स गायब ना हो जाएं जिससे आप पैटर्न को चेक ही ना कर पाओ. So essence of data should be there on when you are reducing the dimension. That part is clear to you? So that should be means you have to means when you are selection the data features, you have to do this part. Means essence should be there of the data. Clear part? ये clear है बेटा? Yes, sir. Okay. So what you are doing? What is the advantage of this thing? You can say, sir, I am going from higher dimension to lower dimension. So somehow you are doing some higher, or the you can say the feature size will be lower, so the higher computations will be there. Yes. And second, the feature size will be reduced. Okay. And higher computations means, sorry, higher computations that is the computations will be lower because dimension is less, so computations will be less. Is it okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes, good, very good. Now I just want to give you one visualization picture for this. I am taking same example, rooms, number of rooms. Okay. Now I am taking second feature. I am taking first the grocery shops nearby the flat. और यहाँ पे ये आपका लास्ट हो जाएगा. दैट इज योर क्या था आपका प्राइस कि कितने में आप खरीदना चाहते हो. सम अगेन आई एम राइटिंग 3 4 5 6 वॉट एवर, सम 8 7 6 9 और अकॉर्डिंग टू 10 lakh 20 lakhs. I'm just randomly putting some data, so don't go and understand this thing. So what is happening? 10 12 20 and something, you can write 15 lakh. Okay. So data is given here. What is happening? Some features are given to you, that is the number of rooms and the grocery shops nearby your flat. Okay, that part is given to you. Okay. So what is happening if you will uh, do if you will represent this data in the scatter plot? What will happen? The data will be look like this. You can say the data maybe look like this. I am taking one example only. आप सीधे मत जाना, बहुत सारा बड़ा डेटा आपको अगर दिया हुआ है. Then the picture maybe look like this. This is the number of rooms, and this is the second. One axis is number of rooms and second axis is grocery shops. Okay, shops. There are two dimensions and the data is look like this. Yes, everyone is with me? Yes, sir. Okay. Now I'm coming on that part, how you will select the things, how you will select the features. Okay. अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ. नॉर्मल अगर कोई आदमी होगा, वो क्या कहेगा, सर व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्चुअली दिस रूम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस. यहाँ पे ये जो है इसका ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा. नॉर्मली
मैं किसी ब्रोकर के पास जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर रूम इतना है तो ये पैसा इसी हिसाब से मेरा बढ़ रहा है, वॉट एवर, ये 25 कर दो, तो ये पैसा उसी रूम के हिसाब से बढ़ रहा है, बट यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। सो नॉर्मली आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ रूम्स और प्राइस डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं केवल एक फीचर्स को ले सकता हूँ, इसको आपको रिड्यूस कर सकता हूँ। मुझे एक्चुअली क्या करना है, आई हैव टू रिड्यूस द डायमेंशंस, but now when I just make a picture, I just take a visualization thing, or you can say some scatter plot, what is happening here, try to understand, then you will realize the in PCA what is happening. I just want to project every point in the x-axis and every point in the y-axis. This is x and this is y. So I am projecting every point in this thing. So what is happening? So ये मैं सभी point को last point को यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। So you can understand every point will reach here, okay, in this part, यहाँ से यहाँ तक के part में everyone understand हिंदी, anyone who don't understand the हिंदी, कोई नहीं, ठीक है, कभी कभी मैं बीच में हिंदी बोल रहा हूँ, that's why I am saying this part. Anyways, so what is happening from here to here, the data is reaching. Yes, this ये part आपको दिख रहा है? Yes. Everyone? Yes sir. Yes sir. Okay. So when I am putting this data, or we are projecting this data in this axis, the data is reaching here to here. Okay, I can say the reach is D. Yes? Hmm. Okay? Yes. Okay, and same Okay. thing I am doing in the y-axis. Okay, in the y-axis, what is happening? I am putting this data in this direction. So last data को किसी को लेता हूँ, यही है this direction. Okay, so every data is coming in this y-axis also. Okay, so some T dash is there. Okay, now you can understand when I am projecting the data on the axis, or you can say what is the feature is given to you, the data is projected on that feature. What is happening? This D is greater than this D dash. Yes. Hmm. So now you can understand where the spread thing, or you can say that is the spread. When I am using the word spread, okay, or you can say this is the variance of the data. Directly spread is not directly, you can say that is the variance, but now I am using the one word, that is the variance. You have, I think all of you have heard this word variance. I will make you means understand what is the variance, but here just I am telling you what is the spread, that is you can say proportional to variance. Yes. Hello. Yes. Yes, sir. Yes sir. Okay, good. So now I am Sir. saying, yeah, अगर मैं पूछूं कि वेरिएंस किसका ज्यादा है, वेरिएंस किसका ज्यादा है, एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का, तो आप क्या कहोगे? द वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन द वेरिएंस ऑफ वाई एक्सिस. So when you are X-axis going, greater. yeah. So when you are going for the feature selection, so what you can do, whatever the variance is greater, you can select that feature. Yeah, so we can select this feature. We will neglect this feature for this understand. Yeah, for this database. Clear? So first key Yes point sir. or tricky point, you can understand the whatever the variance on the projection variance is greater, then you can select that feature only. Yes, otherwise you will not select the. So this is the criteria for the feature selection. Is it okay? So this is the Yes, feature sir. selection. Yes sir. Ravi, आप शायद क्वेश्चन पूछ रहे थे. So somehow this is the first answer for this. Other भी आप समझ पाओगे. So this is the first criteria. The variance on the on particular axis, you can say, or feature, you can say, the projection is the variance is greater, then you will select that thing. So यहाँ पे आपका बहुत कम था और यहाँ पे आपका variance बहुत ज्यादा है. So you will select this feature only. Clear everyone? Yes Yes or sir. no? जहाँ पर भी वेरिएंस ज्यादा रहेगा we are Yes. supposed to select that. Yeah, that feature. Okay, now I am taking the second scenario. Okay, so second scenario, I am taking this example again, the number of rooms. अगर जहां भी doubt है आप मुझे पूछ लो. And second, washrooms. I am
changing the data. Not this time. This is not the again the grocery shop. This is the washrooms, and again that is the price. So 2, 3, 10. Okay, 3, 4. This is 12. 4, 5. This is 15, and this is 5, 6. You can say this is the 18. This is lakh. This type of somehow you will get this type of data. Okay. So now I just want to represent this type of data in the graph or scatter plot. So this is the number of rooms. And this is the number of washrooms. Yes. Now the data will be somehow you are seeing this data. This data is looking like some linear. So first I am making this thing and you can say the data is look like this. Okay. Somehow the data is looking like this. Now again, you can go for the feature selection. One trick I have give you. You can go, you can project again the data. So this is the first data, this is the last data. The every data will come in this part. Okay, तो मैं सभी को नहीं दिखा रहा हूँ. Every data will come in this part. So this is again D. And now you will again you will do the projection on the second axis. So this is the data and this is the last data. You can project this thing here. Again, some projection will be like look like this. Okay, so data will come again. This is the D dash. So in this scenario, you just tell me which one you will take. This feature, number of rooms and number of washrooms. Which feature you will take? Sir, almost दोनों same ही दिख So you can say, sir, this is looking like almost same. Yeah. So here that is a problem of selection the thing. Yes, everyone tell me. Yes, sir. Yes. obviously So because they're almost same. directly. Yes, sir. Yeah, variance is same. लगभग same ही है. Hmm. Then you can say, sir, the importance of the both features are same. So we can't neglect one on the basis of this feature selection criteria. Yes. So that is the problem. Okay. But anyhow, I just want to reduce the dimension. Then what should I do? Okay. Huh? Yeah, square root area. Okay. So one thing I think Vishal is suggesting, sir, anyhow, if we have two features, I can convert this feature in one feature. अगर किसी ब्रोकर के पास जाते और ब्रोकर तेज होता तो क्या कहता कि अच्छा तुम रूम और वॉशरूम छोड़ो, I can go for the area of the flat. Okay, on the basis. अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे पास वॉशरूम कितने हैं और आपके पास रूम कितने हैं. I am only seeing the area. मान लो एरिया कुछ आपका ये वर्ग फुट है. Okay, square feet, some this square feet or some this square feet. So what we are doing, we are converting this 2D data. Again, just look this thing. This 2D data to 1D data. Okay, some price will be there, 10 lakh, 12 lakh, and this 15 lakh, whatever. So what we are doing, we just want to convert this data into this area thing. But every time you are not getting this type of thing, means you can see the data on the basis of that you can take one different type of feature. You are taking one different type of feature here. Different type of features. So what this is the example visualize when you are stuck in this thing. In the feature selections, we will go for the features extraction. Okay, features extraction. So in the features extraction, what we will do, we will take a different type of feature on the basis of whatever the features is given to you. Okay, extraction. And then we will find the thing. कि मैं फीचर्स को अब किसी और डायमेंशन में चेंज करना चाहता हूँ, कुछ और निकाल के लाऊंगा. जैसे मैंने रूम्स एंड वॉशरूम की जगह एरिया को यूज किया. देन इन द फीचर्स एक्सट्रैक्शन आई विल डू समथिंग, some mathematics. On the basis of that, I will go for the different of thing. Clear? Everyone is clear? Till now, you are with me? Yes or no? Yes. Everyone is Yes. सब समझ में आ रहा है जो बताया? Okay. Yes, till now is Okay. Okay. Now we will go some again
first we will go for the PCA. मैंने 3 टेक्निक आपको बताई थी, that is the PCA. This is the principle. Again मैं स्पेलिंग उधर लिख दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा इसे तो. Second is that is the LDA, linear discriminant analysis, and some T-SAM. Okay, these are the 3 techniques. और भी techniques हैं, but we will focus on these techniques. So whenever you are getting the data, now try to relate the things. Whenever you are getting the high dimension data, you have to find out the features extraction thing, and you have to reduce your data. Okay. So first, most of the time PCA बहुत पुरानी technique है. So first you will go for the either you most of the time you will go for the PCA. Okay, बहुत सारी और technique है, but बहुत सारे लोग PCA को use करते हैं, they are getting the good results. So first we will go for the PCA thing कि PCA हम पढ़ते हैं. Okay. So now the topic is PCA, the features extraction technique. This is the principal component analysis. I think कुछ बच्चे इसको जानते हैं. PCA को कितने लोग जानते हैं? कितनों ने किया हुआ है? कोई है ऐसा? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Good. If you know this thing, that is okay. Good. Very good. Okay. Now, please अपने off कर दीजिए. So just a minute. I'm also camera echo कर रहा है. कैमरे से दिक्कत तो नहीं हो रही, echo तो नहीं आ रहा. ठीक है. Anyways. Okay. Wait. So first of all, the PCA is a, मैं आपको ये information बता दे रहा हूँ, just a unsupervised technique. हाँ, PPT बड़ी कर दूँ? Yes, unsupervised machine learning, you can say that is the technique, machine learning technique. Okay. So what was the scenario in the last time? What is happening? The data was somehow that data was the linear. Okay. And this thing nearby similar, that D is equal to almost D, the variance is equal. Okay, or you can say that is the spread is equal. Okay, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ तक डेटा है. Okay, so you can't decide what feature you have to select. So the feature selection technique is not means a good thing for this part. But now try to understand. Now I am taking again the example. The data was looking like this. Okay. So यहाँ पे ये data and this is the data. The same thing is there. Now I am tilting the, you can say somehow I am tilting the axis. Okay. So maybe the axis is here. You can say this is 1, and the parallelly you can, oh, sorry, at the 90 degree it will go here. Yes, everyone is with me. Okay, now you can understand some data इसके अंदर सब data है. Okay, मैंने केवल outside boundary बनाई है. So this is the data. Now you can say, sir, this data will reflect here, oh, sorry, project here, and this data will be projected here. This is the new axis, some x test and y test. Yes. So now you can project. So this is the projection, and this is the new D. Okay, new लिख दे रहा हूँ. This is the new D. Okay, and now if you will project this data on new axis, this new axis, so what is happening? You will reach here, and this is the thing, यहाँ पे था कहीं. So you will reach here. So this is the D test new. Now when we are tilting, means we are tilting somehow we are tilting in axis. You can see this D new is greater than D dash new. Yes or no? Everyone is with me? So this is 90 degrees, no? Yeah, this is 90 degree. Just we are tilting some on some angle, you can say. Okay. So everyone is with me? Hello. Yes.
ऑनलाइन Yes, वाले भी yes, जवाब दे सकते हैं या yes, sir. अब सो नाउ यू जस्ट टेल मी कौन सा फीचर्स हम लोग ले लेंगे जो डी न्यू वाला एक्स है एक्स डैश डी न्यू ले लेंगे मींस we will collect these features. Okay, again the criteria is same whatever we are doing in the feature selection, but now one thing we have done that we have some rotate somehow axis, or we have make some changes in the features. On the basis of that we are saying we can take this feature. Okay, x test feature we can take. So we have to find out this x dash feature. Okay, so whenever we will find this access feature, we can say, or you can say, this is the, again, you can say, again, we are taking this, you can say this is the vector, this is the vector, you can say this is the unit vector, some unit vector. Okay. Or you can say, you can take this feature. So whatever, this is the principal component. Principal, I will tell you this thing, principal component. So how you will calculate this thing, this vector, and what is the means of this principal component, we will learn. But try to understand, make this visualization. We are doing some changes in the feature. On the basis of that, the projection is, the variance is greater. That due to that means greater variance, we are selecting that features only. Okay. So this is the essence, or you can say this is the part of the PCA. अगर ये आपको समझ आ गया, then बाकी तो mathematics है. What will you will understand? That is only the mathematics. Yes? इतना part आपको clear है? Yes. So this x Yes, sir. dash, Sir, Yes. ये x dash जो So है, any question? Access means we are making some change in the features. तो मैंने इसी x को कुछ चेंज करके एक नया फीचर बनाने की कोशिश की ये है. लाइन जो है, हमने जो डेटा है हमारा, उसके बेसिस पे इसको हमने Yes, बनाया on है। some हमने डेटा में कुछ चेंज किया, on the basis of that we are taking this thing ठीक। x test and y test. वो कैसे निकल के आएगा अभी मैथमेटिक्स में देखेंगे. ठीक। So everyone is clear till now? sir, yes, sir. Sir, Yes or no? how do we project? Yes, sir. How do we project these data points towards अभी your मैं वही X सिखा रहा axis हूँ and आपको. अभी उसी पे आते हैं कि उस प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है. ठीक है, कैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं. यस, मैं अभी उस मैथमेटिक्स पे आता हूँ. सर एक क्वेश्न हुआ सर. यस यस, सर हाँ बताओ. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जब डायमेंशन मतलब डेटा में अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमारे एक्सिस सेम रहे लेकिन हमारा जो डी और डी डैश है उसमें डिफरेंस आ जाए, वो इक्वल ना रहे, तो ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है. डेटा में डेटा अगर चेंज नहीं करोगे तो ये डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप उसी एक्सेस पे हो हमेशा. अगर डेटा इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, डेटा में चेंजेस का मतलब आप कह रहे हो कि डेटा को कुछ चेंज करें. सर जैसे आपने अभी बताया कि जब आपने एक्सिस चेंज किया तो उसमें देखो डेटा हमारे पास, देखो मशीन लर्निंग में, एक्चुअली मशीन लर्निंग क्या है, योर डेटा इज गिवन टू यू. ओके, इसमें चेंजेस तो आप कर नहीं सकते. ठीक है, ये तो आपको आपको पैटर्न निकालना है, एक मॉडल बनाना है, तो यू कांट चेंज द डेटा. तो डेटा तो इसी तरीके से रखा रहेगा. व्हाट यू कैन डू, जो भी हमारी मैथोलॉजी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में हम लोग जा सकते हैं. तो डेटा में तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते. अगर डेटा में अगर प्लस माइनस कर लेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं. तो उस एक्सेस पे हम वेरिएंस अलग अलग कर सकते हैं. यस. ओके सर. ओके, ठीक है. चलो, अभी जैसे क्वेश्चन 2 आए कि सर हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उससे पहले मुझे 2-3 मैथमेटिकल टर्म्स आपसे जानने हैं कि आप लोग जानते हैं कि नहीं उस चीज को. सो आई जस्ट वांट टू अगेन, आई एम टेलिंग यू दैट इज द वेरिएंस. कितने लोगों को वेरिएंस पता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेरिएंस. अभी मैंने एक चीज बताई कि जैसे डेटा आपका स्प्रेड है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि सर वेरिएंस इतना होगा, लगभग वेरिएंस, इसको मैंने स्प्रेड को ही वेरिएंस वर्ड दे दिया था. पर डोंट रिलेट दिस थिंग, द स्प्रेड इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस डायरेक्टली. वी कैन से वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू स्प्रेड. ओके, या अच्छा, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ. थोड़ी सी आप लोगों की, अभी तक तो मैं बोल रहा था, थोड़ा सा आपको भी मौका देता हूँ, छोटी शुरुआत करता हूँ. ओके, सबसे पहले एक वर्ड लेता हूँ मीन. ओके, उसको भी विजुलाइज करके देखते हैं. This is your -5, this is the number axis, and this is your 5, and again I am making this thing. This is 10, this is -10, sorry, this is 10. Okay, now you just tell me what is the mean of that. What is the mean of that? I just want to visualize something on the basis of this example. I just want the mean. Mean कितना होगा इसका?
Zero, प्लीज sir. बता दो। हाँ, एक बच्चे ने जीरो बताया। zero. पक्का जीरो? कैसे Yes, आया sir. जीरो, कोई मुझे बताओ कैसे आ रहा है जीरो? Sir, addition of 2 and then divided by the Addition of two. What is the addition of addition two? of these two. Addition of these two. This is also the point. This is the one point also, that is zero. So you can say, sir, 5 plus 0 plus plus 5 by 3, that is 0. Okay, and same here, minus 10 plus 0 plus 10, this is the divide by 3, this is the 0. So you are getting the mean 0. Yeah. So what I want to visualize you in this part, want to make visualize you this part, the data spread of this data here to here. Okay, here to here. The spread is big, but the mean is again 0 and 0. When you are going for the mean, तो कभी कभी mean हमें misguide करता है. If you are taking only the mean in the thing, in the data, तो maybe it may means misguide you कि हमारा इस पार्ट का भी इसका भी आपका जीरो निकल के आया, डेटा कितना भी स्प्रेड है, इस पार्ट का भी हमारा जीरो ही निकल के आया. इस तरीके से और डेटा मैं बना सकता हूँ. Then mean part is clear to you. Then we can go for the variance thing. वेरिएंस नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली आपका जो भी आपका मीन है, हम नॉर्मली आप एक्स बार से, अगर एक्स डेटा है तो एक्स बार से प्रेजेंट कर देते हैं, और सम डेटा इज गिवन टू यू दैट एक्स आई, मैं क्या बोल देता हूं उसको, सम एक्स आई इज गिवन टू यू. ओके, अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बता देना. ठीक है. एंड वी कैन डिवाइड दिस डेटा. अगर आपके पास टोटल एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n है, 1 to n डेटा ले लिया एंड इसका समेशन कर दिया, देन यू कैन से दिस इज द वेरिएंस. तो वेरिएंस एक्चुअली क्या है कि मीन से, अगर मैं मीन यहां मान लूं तो यहां से डेटा मेरा कितना स्प्रेड है. ओके, दैट इज द मीन्स. यहां से पूरा डेटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता है. ओके, दैट इज अ स्क्वायर. So how the data is spread from the mean. So that thing is the variance thing. Okay. Or you can relate this thing with the spread कि डेटा कैसे हमारा फैला हुआ है. That is the means of variance. क्लियर है? इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देते हैं. सम स्टैट्स के जो टर्मिनोलॉजी है वो आप समझ लेना. स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन वो समझ लो, स्टैंडर्ड डेविएशन. जो भी आपका ये निकल के आएगा, इसका अगर अंडर रूट ले लेंगे सम ऑफ दिस, सो यू कैन गेट. सो इसको डायरेक्टली बोल सकते हो दैट इज द स्प्रेड, स्टैंडर्ड डेविएशन. बट दिस इज द वेरिएंस, क्योंकि स्क्वायर भी होता है. स्क्वायर फिर से वही कहानी है, व्हाई वी आर टेकिंग द स्क्वायर. हम मॉड भी ले सकते थे. अगेन somehow we will use the differentiation because at the 0 point अगर मैं मॉड ले लूंगा तो मॉड ये होता है. ओके, मॉड का ग्राफ ये बनता है, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द जीरो पॉइंट. So you can say that why we are using this, because most of the time the gradient descent you have seen, इसका मतलब भी आपका सम पार्शियल थिंग था. ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा तो वेक्टर को आप क्या कर रहे थे, उसको डेरिवेट कर रहे थे, तो वो डेरिवेट इस पॉइंट पे होगा नहीं तो आपका सब जीरो हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सम स्क्वायर थिंग. ओके, दैट पार्ट इज क्लियर. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग. या एक जगह आएगा भी कि हम क्या कहते हैं मॉड भी लेते हैं, वो एमएससी में कहीं सिखाऊंगा उसको भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टेकिंग द स्क्वायर थिंग. दैट पार्ट इज क्लियर टू यू. ओके, एक वर्ड और है पहले ही बता देता हूं, दैट इज द कोवेरिएंस. और इसी की जरूरत आपको पीसीए में पड़ेगी, कोवेरिएंस. अभी आपने देखा कि ओनली एक टाइप का डेटा है आपके पास तो आप वेरिएंस बता रहे हो. अभी मैं इसके रिलेशन को एक्स और वाई का रिलेशन कहीं भी नहीं आया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. So in the covariance, we will also find the relation between these two. Okay, फॉर्मूला तो जो भी होता है, इसकी एक मैट्रिक्स बनती है, बता देता हूँ. मान लो मैं दो का रिलेशन निकालना चाहता हूँ. Okay, x and y. So I can write like this. ये two variable, three variables, so whatever you can take, you can take. So we can say some covariance between x and y here. This is, sorry, x and x. The covariance between x and y here. The covariance C लिख रहा हूँ केवल, x and y here, and the covariance between y and y here. Again I am telling you, the covariance का मतलब होता है different type of identity. Variance का मतलब होता है similar type of identity. So covariance of x and x, you can say this is directly variance of x. Okay, variance of x. So formula variance वाला आप लगा सकते हो. covariance में आपका केवल क्या चेंज हो जाएगा, अगर टू डायमेंशनल है then you can say the summation of something xi minus x bar and yi minus y bar,
एंड डिवाइड बाई एन, ये हो गया। तो दिस इज द कोवेरियंस। ओके, तो कोवेरियंस को निकालने का ये फॉर्मूला हो जाता है। वो दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ हो रहा था, इसको भी डिवाइड करोगे इट विल बी विद द डिफरेंट आइडेंटिटी। सो दैट इज द रिलेशन ऑल्सो, यू कैन फाइंड द रिलेशन। सो मैट्रिक्स आपकी इस तरीके की कोवेरियंस की जनरेट होती है। इज इट ओके? अगर कोई भी टूल आप यूज कर रहे हो numpy एंड वो, तो एक लाइन में ये आंसर निकल के जनरेट हो जाते हैं। सो डोंट वरी कि ये इतना मैथमेटिक्स आपको करना होगा। ओके, बट you have to know what is the concept of covariance, what is the means of covariance. Is it okay? ओके, इसके बाद एक आइगन वैल्यू Yes, का sir. और कॉन्सेप्ट है, उसको उसको मैं लेके आऊंगा। बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या, किस तरीके से प्रोजेक्शन, जैसे क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन को और देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। ओके, सो फॉर प्रोजेक्शन आई एम टेकिंग दिस थिंग। चलो, मेरे पास बहुत सारा डेटा था यहाँ पे। अब उस डेटा की जगह मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर को लेता हूँ, क्योंकि एवरी डेटा इज रिप्रेजेंटिंग, ये एक्स है ये वाई है। सो एवरी डेटा इज रिप्रेजेंटिंग सम एक्स एंड वाई। ओके, x1 y1 x2 y2 वॉट एवर। ओके, मैं क्या करता हूँ, अभी केवल एक एक वैल्यू को ले लेता हूँ, एक पॉइंट को ले लिया। ओके, सो आई कैन राइट दिस इज द x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। प्लीज, हम लंबा क्लास ले रहा हूँ, प्लीज आप मेरे साथ हो ना अभी तक? एवरीवन इज विद मी? ओके, Yes. बोर तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है? No, no. नो? Yes. Yes. Yes, समझ में आ रहा है सर। Anyways, okay, good. Okay, so what we can do, this is one point and I can say, yeah, this is one vector. This is one vector, you can say some u vectors there. Yes? And this is some x-axis. Yes? Okay, and if you want to project this value here, so this is the projection. Yes, when we are going for the projection formula, मैं formula पे आ जाता हूँ. So what is happening in the projection of this u vector will be that u vector on the x-axis and what is the magnitude of u. Okay, so that is the projection. This is, if I am saying this is d, the value of d will be this. And what is the beauty of that? Every time whatever we are taking this u vector, you can say this is the unit vector. ओके, यूनिट वेक्टर मींस क्या होता है कि आपका, ओके, आपका मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, दिस इज ओनली द डायरेक्शन। यस, वेक्टर बोल देता हूँ, यू वेक्टर। सो व्हेन आई एम टेकिंग दिस इज द यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यू विल बी 1, सो यू कैन से डायरेक्टली द प्रोजेक्शन डी विल बी, दैट इज द यू वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर। यस, एवरीवन इज विद मी? ओके, Yes. ओके, चलो मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को एक टास्क देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये u वेक्टर तो मैंने ले लिया, अब मैं एक पॉइंट लेता हूं दूसरा, दैट इज द x2/2। ओके, दिस इज सेकंड पॉइंट somehow, एंड वी आर प्रोजेक्टिंग दिस पॉइंट टू द दिस वेक्टर u वेक्टर, और इसको मैं नाम देता हूं v। then what will happen, this is also a unit vector, you can say this is v vector is again a unit vector, then what will be the answer? ये x1 y1 है, ये x2 y2। अच्छा, इसका आंसर भी बता दूं, उसके बाद करना है इसे। the answer, if you will multiply this, the matrix will be ut into x, the answer will be the scalar thing। इसका जो आंसर आएगा that will be the scalar। okay, तो दैट यू मैट्रिक्स, जो भी आपका मैट्रिक्स है, मान लो इस पॉइंट यू पॉइंट आपका क्या था, x1 y1, तो यू कैन से दैट इज द ट्रांसपोज, सो दिस विल बी लुक लाइक दिस, डायरेक्टली दिस विल बी x1 y1, एंड एक इस पे आपने प्रोजेक्ट किया था, तो इसको अगर मैं एक नाम दे दूं, चलो इन दोनों पॉइंट्स को नाम देता हूं x2 y2। अच्छा, आप बताओ इसका आंसर, जो मैंने आपको दिया है कि दो पॉइंट, ये v वेक्टर को आपको प्रोजेक्ट करना है u वेक्टर पे, देन व्हाट शुड बी द आंसर? किसने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन, वही आंसर करे प्लीज, अगर उसको समझ आ रहा है तो। किसी गर्ल ने पूछा So था, we आई need to थिंक। calculate, yes, sir. So we need to calculate the distance between this v vector and नहीं the नहीं, u vector. I just want to find this d dash value on this vector, this is given to you, this part here to here। So what you can do, again I am telling you, this is the unit vector, so v vector
on the u vector. This is the thing. Yes, this is the answer. Or you can say some v, sorry. So directly, what is the answer? Can we Vt subtract? into u. Can we? Yes, Okay. yes. You can ask. So this is right. So, yeah. Can Yeah, we everyone is getting this subtract? part. Yes, sir. Everyone is with me. Everyone is getting what is happening here. Yes. So what should be the answer? This is the x2. This is the x2 by 2, some matrix. And this is the u1. U is x1, y1. When you multiply this thing, so what is the answer? This will be x1, y1 plus y2, y1, y2. So this is some d dash is coming. Okay. So this is the value. Is it okay? Everyone is okay with? Please let me know. और ये आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. दिस इज द, ये देखो वैल्यू जो आ रही है दैट इज सम वैल्यू x1 कुछ वैल्यू होगी. यहाँ पे मैं 2 3 कर दूं और इसको मैं 4 5 कर दूं, वॉट एवर. सो सम स्केलर क्वांटिटी यू विल गेट. सो डी वैल्यू यू विल गेट हियर. क्लियर हो एवरीवन? प्लीज जो ऑनलाइन है. हमने डी डैश को जो है Yes, वी वेक्टर sir. इनटू यू वेक्टर लिया था. इसको वी वेक्टर लिया है. जो मैंने दूसरा पॉइंट जो बनाया इस पी बोल दो इसको, पी लिया है x2 by 2 पी वैल्यू को. ओके और उसको प्रोजेक्ट किया है यू वेक्टर के ऊपर. देन दिस इज द आंसर. लास्ट टाइम हमने इसको इस पे प्रोजेक्ट किया था. यस एक्स एक्स पे. ओके सो द प्रोजेक्शन पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes. प्लीज. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so I have told you about the variance thing. Okay, the covariance thing and projections. Okay, third projections. इससे पहले एक और चीज होती है दैट इज फोर्थ इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. आइगन वेक्टर. ओके चलो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करवाता हूँ. मेरे पास एक टूल था बट वो टूल क्या कहते हैं, मैंने सर्च किया अभी, उसमें थोड़ा विजुलाइज वाला पार्ट मुझे मिला नहीं. बट अगर वो मुझे मिलता है तो देन आई विल क्लियर दैट पार्ट ऑन द नेट ऑल्सो. एक नेट पे एक टूल था जिसमें आपको वेक्टर्स आप दिखते, बट आई विल ट्राई कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके so what is happening? I am sorry. somehow एक मेरे पास इस तरीके का है. दिस इज द वन पार्ट और मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लगा देता हूँ. ओके ओके तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया कि ये आपकी एक्स एक्सिस है कुछ, ये अभी एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो. यहाँ एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है. सम डायरेक्शन इज देयर, सम वेक्टर इज देयर. ओके अब मैं इसको क्या करता हूं, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था. एक चीज मैं करता हूं यहाँ पे इन सेकंड सिनेरियो, somehow I am tilting the x डायरेक्शन. मैं क्या करता हूँ कुछ इस तरीके से बनाता हूँ. मैंने किसी एंगल पे आपका टिल्ट कर दिया. ओके और somehow this is looking like that. उतना अच्छा नहीं बना है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट इज हैपनिंग हियर. ओके इसका जीरो यहाँ पे था मान लिया एंड इसका जीरो समहाउ यहाँ पे है. ओके एक एंगल पे मैंने इसी चीज को थोड़ा सा टिल्ट किया, जो एक्सिस थी आपको वो पैरेलली सब टिल्ट हो गई. यस और नो? यस. so somehow some y will be here and x will be here. Okay so this project, this a vector may be look like this. Okay so पहले जो यहाँ था वो यहाँ पे दिखने लगेगा somehow this vector. और मैं एक इसका यहाँ पे तो आपका मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा. मान लो एक वेक्टर और लेता हूँ, ये वाला वेक्टर लेता हूँ, तो ये वेक्टर आपको somehow इसका मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे कट करता तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख सकता था. ओके देन I just want to tell you in this scenario, ये आपको विजुलाइज में करवा दूंगा. In eigenvalue, वो eigenvector, what is happening when you are taking the 2D thing? In this scenario, only the two vector will be like this. That orientation, or you can say direction, will be the same. Only the two vectors that have the same direction. Otherwise, कोई भी वेक्टर लोगे
ठीक है, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, वो यहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में चले जाएंगे. ओनली देयर विल बी टू वेक्टर्स, द डायरेक्शन विल बी सेम. मे बी the magnitude will vary. Okay, only two vectors will be look like this, that direction will be same but the magnitude may be vary. So whatever the vectors are there, the vectors are the eigenvectors. Okay, and the magnitude will be vary. What is the means of that? That may be some scaling. Okay, so that scaling part, whatever the value is scaled, means जो एक छोटा वेक्टर यहाँ पे था वो अभी बड़ा हो गया है या उससे और छोटा हो गया है. इन दूसरे, ये आपकी एक्स एक्सिस के लिए था, ये आपकी सेकंड एक्स डैश बोल दे रहा हूँ, वाई डैश बोल दे रहा हूँ, ये वाई डैश एक्स डैश बोल दे रहा हूँ. मे बी ये आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गया हो या डिक्रीज कर गया हो. वो जिस भी फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज करता है, दैट इज द फैक्टर इज आइगन वैल्यू. यस, everyone is clear on these 2 points? Clear beta? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. what is the means of eigenvector and eigenvalue? That should be clear to everyone. वो निकलता कैसे है, that is easier thing कि मैं अगर सीधा बोल देता हूँ कि अगर कोई एक वेक्टर है a और इसको मैं b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और वो लैम्डा वैल्यू सम आइगन वैल्यू ये है और ये एक वेक्टर है, तो इससे इसके थ्रू हम आइगन वैल्यूज को निकाल लेते हैं. ठीक है, वो मैथमेटिक्स चीज बाद में बताऊंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू. दैट पार्ट इज क्लियर टू यू? यस और नो? यस. अच्छा, Yes, sir. मुझे यहाँ पे एक आंसर बताओ. एक आपने मैट्रिक्स सुनी होगी, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपकी आइगन वैल्यूज जनरेट करें, मींस और यू कैन से कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी आइगन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, देन व्हाट विल हैपन? मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम और इट विल चेंज. ये थोड़ा सा बताओ. आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहेगा आपका, कुछ इस तरीके का होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यस, अगर इस ये आपका मैट्रिक्स आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स निकल के आता है, देन अगर किसी भी ओरिएंटेशन में हम लोग मूव करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज, उसके मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी. ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक होती है, तो चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी 2 चीजें आपको समझ आई क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीसीए. यस और नो? यस. Yes, sir. ओके, अच्छा, स्टार्टिंग में Yes, मैंने sir. आपको बताया है. यस, अब हम फिर से मैं रिपीट में आता हूँ. ये तो कॉन्सेप्ट आपको चारों पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए. आई थिंक, आई बिलीव दैट पार्ट ये आपको समझ में आए होंगे. थोड़ा सा पीएचडी में हो तो आई बिलीव कि कुछ कुछ पहले भी मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है आप लोगों ने. यस, तो दैट पार्ट शुड बी क्लियर. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ. फॉर द फीचर सिलेक्शन पर्पस व्हाट शुड बी द वेरिएंस वैल्यू शुड बी ग्रेट. variance value should be greater, or you can say that is the maximize. Okay, that should be the max. Okay, चलो अभी इसी पे बात करते हैं, इसी चीज पे बात करते हैं. वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? वेरिएंस का फॉर्मूला बताया 1/n समेशन ऑफ i is equal to xi y. 1 to n sum xi, that is x bar means x mean, you can say that is square. Okay, so this is your variance. अब इस टर्म में मैं बात करूं, इसी प्रोजेक्शन टर्म में अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया था इस यूटी को, मुझे अब क्या निकालना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने क्या किया था फर्स्ट, जब मैंने आपको सिखाया, मैंने जब ये सिखाया तो मैंने क्या किया, एक कोई वेक्टर ले लिया, ठीक है, उसको एक्स पर प्रोजेक्ट किया, तो आपका डी या सभी को मैंने एक साथ प्रोजेक्ट किया, सभी वैल्यूज को, तो आपका डी और डी बार इक्वल निकल के आया था. फिर मैंने ये एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर ही होगा, somehow this is the vector. इसको अगर मैं u नाम दे दूं तो मुझे ये u वेक्टर फाइंड आउट करना है कि किस एंगल पे मैं घुमाऊं कि इस ये जो आपका वेरिएंस है ये मैक्सिमाइज हो जाए. I just found that is the motto of this principal component analysis. What should be this u vector? ओके, इसका डायरेक्शन एक्चुअली हमें पता करना होता है. मैग्नीट्यूड कुछ भी हो दैट इज ओके, कि डायरेक्शन इसका क्या होना चाहिए कि आपका जो वेरिएंस है दैट शुड बी द मैक्सिमम. यस,
Yes, everyone is clear on that? Yes. Okay. So again I am telling you, yeah, कुछ कोई क्वेश्चन था यहाँ पे? Hello? I think there is no question. Okay. So I am going again in the last thing. Yes. What is okay. So इसको याद रखना, इस डायग्राम को, या तो मैं इस डायग्राम को यहीं पे ले आता हूँ कॉपी करके, शायद होगा नहीं, एक एक पार्ट होगा, नहीं होगा। एनीवेज इस स्लाइड को ला सकता हूँ दोबारा कॉपी करके। सो आई एम ट्राइंग दिस थिंग कि ये आपको याद बना रहा है, कॉपी करके इसको इसके आगे ले आता हूँ। ओके, तो बार बार मुझे इसकी जरूरत होगी एक्चुअली। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस एक्स आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे आपको ये यू वेक्टर जो लिया था, इसको मैंने इस पे एक्स एक्सिस पे आपका क्या किया था, रिफ्लेक्ट प्रोजेक्शन किया था। एक पॉइंट को लेके चलता हूँ, या आप सभी पॉइंट्स को लेके चलेंगे तो एक्स आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स आई वाई आई से। सो यू कैन से दिस पार्ट कि मैं एक्स आई को अभी क्या लिख सकता हूँ मैथमेटिकल टर्म में, I is equal to 1 to n, and this time I am projecting the thing. So what I can write, this is the ut into xi. Okay, that is the projection part. Second thing is mean को कैसे निकालते हैं? Mean हमेशा याद रखो, every time when you are going for the mean will come from the this thing, whatever the data is given to you. तो मीन कहीं निकलेगा, उसका प्रोजेक्शन क्या होगा? अगर मीन यहाँ पे इस डेटा का, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? तो यू कैन से सम ut इंटू एक्स एम। ओके, सम मीन पॉइंट हमने ले लिया, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, तो व्हाट यू विल डू, सम ut दैट इज द एक्स एम। ओके, और मुझे क्या करना है, इस क्वांटिटी को जो वेरिएंस निकल के आया, दिस इज अ स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज करना है। यस, इस टर्म को अगर मैक्सिमाइज कर लूं तो यू विल फाइंड दिस u, जो आपका u निकल के आएगा, दैट विल बी योर दैट वेक्टर विल बी योर principal component. Okay, that will be your principal component. Is it clear? Everyone is clear on this point? Whatever the maximum, so Yes, sir. mathematics is okay. Mathematics इसके पीछे थोड़ी सी ज्यादा है, but now I will tell you what is the step you have to take for finding the mathematics. So if you will go for this thing, so this is the problem now, that is the optimization problem. So you can say this is the objective function, and you have to find whatever the value that will be maximum. So this is the optimization problem. uh so you have to find out this u value. So u value को निकालने का नॉर्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बताऊं, so I am telling you, so step by step if you will go, so what is happening, why we are coming in this point, why we are taking the maximum thing, that part is clear, because you have to do the maximize the variance thing, and that feature you will take. That's why we are doing this thing. Clear? This maximize thing. Sir, So step by sir, sir, one thing that I'm confused with, you are taking the data point that which has the maximum variance, and we are bringing those not data data points point, not data towards. point. Yeah, It I'm is just telling you. yes. I just want to find out what is, देखो यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता था, जो एंगल मैंने यहाँ दिखाया, एक आपका यहाँ भी हो सकता है इतना मोड़ू, एक आपका यहाँ भी हो सकता है इतना मोड़ू, या फिर मैं इस पूरी एक्सिस को, जो आपका डेटा था, ये वाला पहली एक्सिस है, ओके, सेकंड आपकी एक्सिस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, पूरा मुड़ जाए यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब ये सभी यू वेक्टर हैं एक्चुअली, इस u वेक्टर को जो सबसे अप्रोप्रिएट u वेक्टर होगा, जहां वेरिएंस आपका हाईएस्ट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है कि किस एक्सिस पे हमारा वेरिएंस हाईएस्ट है। यस, सो दैट इज द मोटो। इज इट क्लियर Sir, टू यू और but नॉट? I mean, sir, why we are selecting the thing which has the highest or maximum variance? We can Because is can't that we? time I am Yes. taking, yeah, I am taking this example ना, so you can understand कि कौन सा फीचर्स हमें एक्चुअली, कौन से फीचर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा में, जो हमें ज्यादा आंसर की तरफ ले जाएगा। ओके, तो ये चीज हम प्रिंसिपल कंपोनेंट से कर रहे हैं। हमें एक्चुअली क्या करना है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, कि हमें वो फीचर हटाने हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ओके, कोशिश वो है, और हमारे लिए जो यूजफुल फीचर्स हैं उनको हमें रखना है। तो जो सिनेरियो निकल के आया जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो जहां ज्यादा वेरिएंस रहता है वो फीचर्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे।
यस, इज इट ओके? सर ये हमेशा हाँ, ये होता हमेशा, है? दैट इज दैट, या हमेशा ही होता है, दैट इज द ट्रूथ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर टेकिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कि वेरिएंस यहाँ ज्यादा होगा, वहीं आपका डेटा क्या कहते हैं, डेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिस एक्सिस पे, जिस फीचर्स पे आपका वेरिएंस ज्यादा है, वो डेटा हमारा, क्योंकि ऐसे भी समझ सकते हो कि वहां हमारे डेटा ज्यादा स्प्रेड है, ओके, और दूसरी एक्सिस पे हमारा डेटा बहुत कम स्प्रेड है। यस, क्लियर? मैक्सिमम यस ओके, सर। जहाँ ज्यादा डेटा अवेलेबल है वहां से हम पैटर्न्स को ज्यादा निकाल सकते हैं, है ना? तो ये कुछ कंसेप्ट। यस, ओके। ओके, ओके, नाउ आई एम कमिंग स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, वन थिंग, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मीन, ओके, और यू कैन से मीन कैप्चर्ड। मीन कैप्चर्ड का मतलब क्या होता है? आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ योर डेटा इज लुकिंग लाइक दिस, एक 2D में डेटा है आपका, वो यहाँ पे इस तरीके से स्प्रेड है। इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मीन कैप्चर्ड, तो मीन को मैं जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को, इस एक्सिस को इस तरीके से मूव करता हूँ कि इसके मीन पे वो चला जाए। ओके, तो ये डेटा था, दिस इज द डेटा एंड वी आर पुटिंग दिस डेटा हियर, x and y. So this is the zero. So we can say, तो most of the time ये देखा गया, even though आप ऐसा कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ओके, लेकिन बहुत टाइम देखा गया कि इफ यू आर मेकिंग द डेटा मीन कैप्चर्ड, देन इट इज मोर यूजफुल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और एक्यूरेसी उससे ज्यादा निकल के आए। ओके, तो सेम कह सकते हो कि मीन फाइंड आउट कर लो, या तो एंड दूसरा तरीका हो सकता है कि मीन कैप्चर्ड पे आप लोग डेटा को उसको पहुंचा दो। दैट पार्ट इज क्लियर? यस, okay, second Yes, thing, sir. you have to, yeah, you have to find out the variance, कि आप लोग वेरिएंस को, सॉरी, कोवेरिएंस को फाइंड आउट करोगे, कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ओके, सेकंड थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स। थर्ड थिंग इज दैट you have to find out the eigen values or eigen vector। ओके, देखो, एक मैट्रिक्स अगर मेरी जनरेट होके आई, समथिंग 2 3 4 5, मान लो ये मेरी कोवेरिएंस जनरेट होके आई, देन आइगन वैल्यूज आप निकालना जानते होगे, नहीं जानते तो एक बार सर्च करना, 2 - λ 5 - λ, ठीक है, दैट इज 4, दैट इज 5, एंड यू विल टेक दिस डिटर्मिनेंट एंड यू विल पुट 0, एंड you will get two values, λ1 and λ2, okay, some lambda you will get। तो 2 लैम्डा, 2 लैम्डा की वैल्यू, सॉरी, ये लैम्डा आपका सेम रहेगा, आपकी लैम्डा की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। यस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी लैम्डा की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक वैल्यू आपकी बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी। मान लो ये 10 निकल के आती है और ये वैल्यू निकल के आती है 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि लैम्डा की वैल्यू, जिस लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू ज्यादा निकल के आई है, उसकी तरफ ज्यादा वेरिएंस फैला हुआ है। ओके, ज्यादा डेटा स्प्रेड है, जिसकी जो वैल्यू ज्यादा निकल के आई हो उस तरफ ज्यादा डेटा स्प्रेड है, मींस हमें वो वेक्टर लेना है। इज इट ओके? यू विल डिसाइड। अब आपका देखो 2 डायमेंशनल डेटा था यहाँ पे, λ1 एंड λ2 निकल के आया, मींस आपका 2 डायमेंशनल डेटा है, एंड यू वांट टू reduce the dimensionality, then you will take this data, whatever the value is greater, you will take this data and you will say I will make the data on the basis of that, this only this vector, so I am reducing the dimensionality 2D to 1D। ओके, या 3D डेटा होता, अगर आपका मैट्रिक्स 3D निकल के आता, तो यहाँ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, 9 9, okay, so you will get the λ1, λ2 and λ3, on the basis of that you will find ये 10 होता, ये 7 होता, ये 3 होता। नाउ इट इज योर चॉइस, यू वांट टू मेक द डेटा 2D और 1D। अगर 1D बना रहे हो देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस थिंग, अगर 2D बना रहे हो तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस थिंग, these both of the thing, on the basis of that you will find the solution कि आपका वो 3D से 2D और 1D में जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो, इट विल बी कन्वर्टेड। इज इट ओके एवरीवन? यहां तक मेरे साथ हो, यहां तक समझ में आ गया? ओके, गुड। Yes, sir. चलो, इसके बाद केवल ये रह जाता है, केवल आपको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना रह जाता है, कि जिससे आपका, जैसे आइगन वैल्यू निकल के आई है, तो ये आपका अगर कोई डेटा है जिसमें 1000 पॉइंट थे, ठीक है, और आप एक ही वेक्टर को ले रहे हो, तो इसकी डायमेंशनलिटी क्या हो जाएगी, 1000 into 1। ओके, 1000 into 1। इज इट ओके?
और इसको प्रोजेक्शन करना है आपको, क्योंकि आइगन वैल्यू आपकी निकल के आ गई तो आपको प्रोजेक्ट करना होता है। तो आप क्या करोगे इसको, आ, इसको कैसे मान लो आपके पास 1000 का डेटा था, ये 1 से लेके 1000 तक के डेटा है, रोज हैं आपके पास फीचर्स। सॉरी, इसको चलो मैं बाद में समझाता हूँ, अभी इतना देख लो। मैं डायमेंशनलिटी को समझा दूंगा जब मैं कोड आपको इसका कराऊंगा, कल मैं इसका कोड आपको एक समझाऊंगा, ठीक है, वहां पे ये डायमेंशनलिटी वाला टर्म समझा दूंगा कि डायमेंशनलिटी कैसे हम रिड्यूस कर दिखेगी आपको, कि रिड्यूस होगी। अभी आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, दैट इज मीन फाइंड आउट कर लो, मीन तो निकालना ही पड़ेगा एक्चुअली आपको कोवेरियंस निकालने के लिए। तो बेसिकली आपके पास 2 ही स्टेप है, यू हैव टू फाइंड आउट द कोवेरियंस मैट्रिक्स, then on that matrix you will find the eigenvalue and the eigenvector, and whatever the eigenvector is greater, that is your principal component, principal component। क्लियर हुआ? तो आपका डेटा किस तरफ ज्यादा स्प्रेड है, जो कंपोनेंट हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट ज्यादा होगा, जिस लैम्डा के आइगन वैल्यू की ज्यादा वैल्यू होगी, वही हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, एंड इन दैट डायरेक्शन द डेटा इज स्प्रेड मोर। ओके, वेरिएंस आपका ज्यादा होगा। इज इट ओके? हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल, वैसे मैं कोड का भी प्लान था कि मैं आज आपको कोड भी दिखा दूं इसका, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द, जब आपकी कल ही है क्लास, तो मैं आपको इसका कोड बता दूंगा, एक बार रिवाइज करके आना इसको पूरे कॉन्सेप्ट को, कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। मेन आपका मैं इतना भी पढ़ा सकता था कि आपको इतना करना है, बट व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट, कि आप एक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो, दैट इज द स्टोरी, कि उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, वो कैसे प्रोजेक्ट होता है, वेरिएंस क्या है, क्यों हम इस पार्ट को ले रहे हैं। All the things are, I think, I believe that that part is clear to you everyone। अगर नहीं होगा तो I will put the my recording on YouTube or whatever the link I will provide, so एक दो बार उसको रिवाइज करके देखना, जब डाउट आए तो you can ask me, क्योंकि मैं एक फ्लो में जाता हूँ, तो मे बी आपके शायद आंसर्स ना भी हो पाए, तो you can ask me the question after that class। Okay, so thank you very much all of you, so I'm stopping this thing here, the recording। Thank you, sir. Okay, okay, Thank you so much, sir. प्लीज अभी स्टॉप करने के बाद 2 मिनट